जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम आइल्स पार्ट 3 जो डिस्कशन पार्ट है आइल्स स्पीकिंग का, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए मैं आज दोबारा जो 3 आइल्स के टेस्ट हुए थे उनके पार्ट 3 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए पहले क्वेश्चन और पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले पार्ट से मुराद अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली पार्ट 3 है। ये मैं एक टेस्ट का पार्ट 3 है जो मैं आपके सामने भी बयान करूंगा उसके क्वेश्चंस। तो इससे मुराद मेरी ये थी कि पार्ट 1, वो पार्ट 1 नहीं है एक्चुअली, वो आइट्स का पार्ट 3 है जिसको हम डिस्कशन पार्ट कहते हैं। What do people do to protect their things? People hire the services of the security guards to protect their things. As there are so many security companies that are offering their services to protect the people's belongings. So most often people hire the services of security guards to protect their belongings, to protect their assets. And sometimes they also save or put their belongings into banks lockers. That is another place which is considered one of the safest places to protect or to preserve one's assets or to one's belongings. यानी लोग क्या करते हैं, या तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स की सर्विसेज लेते हैं या फिर वो अपनी चीज़ों को बैंक लॉकर्स के अंदर रख देते हैं। Has crime and theft increased? Yes, unfortunately, the crime and theft rate has really increased, and this rate is increasing with every passing month and year. As people's lifestyles have changed, they need more money. As new and new amenities of life are becoming part of people's lives, so to fulfill their carnal desires, they they mostly involve in the crimes, and they also involve in different kind of stealings. And also inflation has also increased so much in present era, and this price hike is not stopping anywhere, and it is continuous. So, on the other hand, there is also so much unemployment, and this unemployment make people involve in the illicit or illegal activities. Illicit होता है जो नाजायज किस्म की हो, illegal activities like crimes and thefts. What is the reason for the increase in the crime and theft? As I already told you, the poverty, price hike, inflation, dearness, all these things making people to involve in the crimes. When people see that it is not possible for them to make both ends meet, when it is not possible to fulfill their basic needs, so people involve in the crimes and thefts. And sometimes they also involve in the crimes to fulfill their desires to have a luxury life, to have expensive cars, to lead or to spend a luxurious life. So these are some of the causes of increasing crime and theft in our society. तो ये कुछ महंगाई होगी जैसा कि हम देखते हैं। इसी तरीके से लोग अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, पुरतैश ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारी भी ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा मसला है जो लोगों को मजबूर करता है कि वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। What do people lose often? Most often people lose their money, they lose their jewelry, they lose their precious things, and the things which are easily portable. Easily portable in the sense कि जिनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. And people are mostly deprived of very expensive things.
like gold, cash, and precious gems, and also, as I already told you, maybe rare things. What would you do if you found a stolen item? If I found a stolen item, I would try my level best to find its owner, find the one who it belongs to. And as we know that Islam advises us to think at the very place you find it, because most probably its owner will definitely search for it. But as we know that in this present era, this practice is not applicable in most cases. So I would try my level best to find its owner. If I can't find it, I may give it to some charity. So, do you think people return stolen things? In most cases, if I talk about my country, in most cases, people return the stolen things to their owners. Yes, there may be some instances, कुछ ऐसी मिसालें भी हमें देखने में मिलती हैं, where people don't return the stolen things to their owners. So, overall, the number of people who return to the stolen things to their owners is quite higher in our country. यानी वो लोग जो कि ये स्टोलन थिंग्स अपने मालकों तक पहुंचा देते हैं, उनकी तादाद अच्छी खासी है हमारे मुल्क के अंदर, उनकी तादाद ज़्यादा है। आइए नेक्स्ट डिस्कशन पार्ट की तरफ चलते हैं। ये एक और टेस्ट का पार्ट 3 है। व्हाट अदर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन योर कंट्री? असल में ये आपके जहन में भी होगा कि व्हाट अदर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन योर कंट्री का क्वेश्चन उसने क्यों इस्तेमाल किया, जब से इससे पहले उसने कोई किसी फेस्टिवल का मेंशन नहीं किया। चूंकि पार्ट 3 में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली वो ज़्यादातर पार्ट 2 से रिलेटेड होते हैं, जिस पर स्टूडेंट को क्यू कार्ड में बोलना होता है, स्पीच करनी होती है। तो चूंकि वहाँ पर टॉपिक था कि किसी फेस्टिवल को बयान करें, ठीक है, वो क्या फेस्टिवल था वगैरह वगैरह, तो उस फेस्टिवल के अलावा ये क्वेश्चन है कि व्हाट अदर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन योर कंट्री। मैंने क्यू कार्ड में सपोज बोला था कि ईद उल फितर इज द फेस्टिवल विच इज सो पॉपुलर इन आवर कंट्री। अब उसकी तरफ आते हैं कि व्हाट अदर फेस्टिवल सेलिब्रेट द अदर फेस्टिवल्स अपार्ट फ्रॉम द ईद उल फितर और बिसाइड्स ईद उल फितर। The other festivals that are popular in our country are Eid ul-Azha and also Eid Miladun Nabi. Eid ul-Azha, we know that, is the second biggest festival, which is also known as Eid festival, that is celebrated on the 10th of Zilhijjah. And people celebrate this festival for 3 days. And Eid Miladun Nabi is another festival which is celebrated to commemorate the birth of the Prophet Muhammad, may God be pleased with him. And this festival is celebrated on the month of Rabiul Awwal, on the 12th Rabiul Awwal, according to the Islamic calendar. Nowadays, some festivals are disappearing. Is this a positive or a negative thing? उसने सवाल किया है कि आजकल कुछ फेस्टिवल्स ख़त्म हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। आपके ख्याल में ये एक मस्बत चीज़ है या मनफी पहलू है या मनफी चीज़ है? It may or may not be. It may be positive or it may also be negative. Positive in the festivals, in the past there had been the festivals. People used to celebrate the festivals which involve a lot of violence, and those festivals are disappearing nowadays.
and it is really a positive thing. On the other hand, there are also some festivals that were part of some specific culture, as this is the era of globalization. So people are celebrating the global festivals, and now they are forgetting the cultural festivals that were part of the past, that were part of the past in different cultures, and those are disappearing. And this is really negative thing, because these festivals are very much part of a culture. If those festivals are disappearing, most probably those cultures are also disappearing with them, which is quite a negative thing. In what way are today's festivals different from those in the past? I think today's festivals are more glamorous. They get more coverage. They become part of international headlines. In most cases, the people, even living in the remoter parts of the world, can see those festivals. They can see the activities of those festivals live on their TV channels, also live on social media. But in the past, those festivals remained confined to the local areas, confined to the local people. So, the activities or the action taken place in those festivals was not known to the rest of the world. माजी में जो एक्टिविटीज़ होती थी फेस्टिवल्स में, उनके बारे में दूसरे लोगों को नहीं पता चलता था। आज के दौर में जैसे कि मैंने बयान किया है कि फेस्टिवल्स के बारे में पूरी दुनिया में लाइव कवरेज के ज़रिए पता चल जाता है, और ज़्यादा ग्लैमर भी है उसके अंदर। एंड ऑल्सो वी फाइंड ए लॉट ऑफ इनोवेशंस इन दोज फेस्टिवल्स टुडे। आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार मुझे रोकना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, तो इसलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ता है क्योंकि गाड़ियाँ गुजरती हैं, इस तरह का जो माहौल है। डू यू थिंक पीपल विल क्रिएट न्यू फेस्टिवल्स इन द फ्यूचर? मे बी द वे new festivals are becoming part of our day to day lifestyle, so there is more probability of creating new festivals in the future. But when, where and how will they be created, it is unknown. नेक्स्ट पार्ट एक और आइट्स टेस्ट के स्पीकिंग टेस्ट के पार्ट 3 की तरफ आते हैं, जिसके डिस्कशन क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। डू यू थिंक गार्डन्स हैव टू बी बिल्ट विद इन द सिटी बाउंड्रीज? यस, it is very important to build the gardens within the city boundaries, because gardens are meant for the people, so that the inhabitants of a city can easily have access to those gardens. In most cases, we observe the gardens that are located away from the cities, they mostly remain out of the access of the people. So you mostly find no people there, and ultimately they are also not properly protected. So it is very necessary that the gardens to be built either in within the cities or at the suburbs of the cities, या फिर वो जो शहर के बैरूनी किनारे उन पे होने चाहिए, और they must be within the city centers, so that more and more people could have easy access to them. Do you think the government has to allocate more money to gardens? क्या आपके ख्याल में हुकूमत को इन बागात के लिए ज़्यादा पैसे मुख्तस करने चाहिए? Of course, it is very important
for the government to allocate more money for these gardens, because these gardens needs renovation, they also needs more protection. So for their maintenance, and also we know the population of the cities is increasing very fast, so there is the need of more gardens even within a city to meet the requirement of the people. So it is necessary for the government to allocate more money and allocate more funds for these gardens. Among the elderly and the young, which group do you think enjoys gardens more? I think both. If you talk about the young people, they are more enthusiastic, they are more excited. So they wish to visit the gardens to chill out, to take photographs, and also there are so many gymnasiums nowadays. There are theme parks in the gardens. There are theme parks nowadays. So they really grab the attention of the youngsters. So young people prefer to visit the gardens. On the other hand, or the old also needs, or they also enjoys the gardens, because they really feel solitude, as they are more solitary, क्योंकि वो ज़्यादा तनाव होते हैं. They need the company of other people, which in their houses they may not find. So they prefer to go to the gardens, where they really enjoy the natural environment, where they may see mob of people, where they may come across other old people who they interact with, who they recall their past memories. तो मैं ये सवाल था कि जवान या बूढ़े कौन ज़्यादा एंजॉय करता है गार्डन्स का, तो मैंने दोनों का कोशिश की अपने लिहाज से बयान करूं. इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उसने कहा दी एल्डरली एंड द यंग, उसने पीपल यूज नहीं किया. तो आपके जहन में ये भी हो सकता है कि इसलिए कि जब क्वालिटी एडजेक्टिव के से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी लगाते हैं तो वो जमा बन जाता है. तो दी यंग मीन यंग पीपल, सो यू डोंट नीड टू ऐड पीपल, दी यंग पीपल. ठीक है, इसी तरीके से दी एल्डरली मीन ओल्ड पीपल, यू डोंट नीड टू ऐड पीपल विद इट. तो उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपके लिए आपको पसंद आया होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा. तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अपने इस काम को जारी रखूं और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहूं. लेकिन आपको पता है ये तभी पॉसिबल होगा कि मेरा इंटरेस्ट इसमें बरकरार रहेगा और बढ़ेगा, कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे और शेयर भी करते रहेंगे मेरे चैनल की वीडियोस को, और बेल आइकन को भी आप प्रेस करते रहेंगे, जिससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको दुआओं में याद रखूँगा. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.